Hello, my dear students. Today we are going to discuss a lesson from class 7th English textbook. The name of the lesson is How Poor We Are. आज आम सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहीर गोटे लेसन पढ़ा लेसन टीर नाम है हाउ पुअर वी आर. In this video we will cover SGP1 detailed explanation question and answers. आज आम SGP1 आलोचना करवा डिटेल एक्सप्लेनेशन एवं प्रश्नोत्तर आलोचना करवा. फर्स्ट लेट अस लुक एट द टाइटल. प्रथमे लेसन रो नामटी को पढ़िया पुणी थे. हाउ पुअर वी आर. पुअर गरीब आम जाने. तो ये गोटे कहानी अच्छी बापा और पुओ मध्य. ये गोटे धनी बापा आ गोटे धनी बापार पुओ किंतु से माने किभली गरीब ए कथा कहानी अच्छी. आमे लेसन टी को डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़िबा. ओके, लेट्स बिगिन. Once upon a time there was a very rich man. He, along with his family, lived in a big palatial building on the top of a hill. Once upon a time, थरकर कथा, गोटे very rich, बहुत बड़ धनी व्यक्ति जड़े थिले. He lived, से बास करथुले निज परिवार सह. Where? In a big palatial building. Palatial कौन? Palace, resembling a palace, माने गोटे राजप्रसाद सदृश्य. लग्जरियस माने गोटे विराट आकार घरे बा गोटे बिल्डिंग रे से बास करथुले. से बिल्डिंग टी एते बड़ थिला जे सेटा गोटे राजप्रसाद सदृश्य देखा जाउथला. एंड वेयर वाज इट? कोउंट थिला सिटी? इट वाज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. गोटे छोट पहाड़ रो शीर्ष भाग रे सेही बिल्डिंग टी थिला. His house was surrounded by tall boundary walls like the Chinese Great Wall. The walls were his protection from outside attacks. His house was surrounded. ताको घर चारिपटे बेढ़े की थिला. Surrounded means encircled, बेढ़े की रहिबा, घेरी थिला. कौन थिला? by tall boundary wall, उच्चा उच्चा बाउंड्री वॉल तांकर थिला. पाचेरी थिला. से पाचेरी गुड़ाक किभली देखा जाउथला? लाइक द चाइनीज ग्रेट वॉल. किभली देखा जाउथला? चाइनार जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शुणिथिबो तुमे, चित्र देखि परिबो. दिस इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पृथ्वीर सप्ताश्चर्य मध्य गोटे ये जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जहाँकि बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा करने यहाँ तैयारी होता. एक कथा भी कह जाए जे कुआडे महाकाशरु मध्य पृथ्वी रे ये जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा जाए. से जहाँ भी हो से धनी लोकंकर पाचेरी कांथ एते बड़ थिला लागुला जमती सेटा गोटे चाइनीज ग्रेट वॉल. द वॉल्स वेर हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स. प्रोटेक्शन मीन्स सेफ गार्डिंग, सुरक्षा. यही बड़ बड़ पाचेरी तांकु बाह्य आक्रमण सुरक्षा दौला. He too had private soldiers and a great bulldog to protect him. तांकर आ कोन थिला? He had private soldiers, security, private security guard सब थिले, and a great bulldog. बुलडॉग गोटे डॉग ब्रीड, ए डॉग ब्रीड, लुक्स वेरी मस्कुलर, पूरा मोटा रोटा हृष्टपुष्ट देखा जाउथबा गोटे कुकुरर प्रजाति. कुकुरर भिन्न भिन्न प्रजाति सब अच्छी, जेमती कि लैब्राडोर अच्छी कि बुलडॉग अच्छी. तो एभली तांकर गोटे भयंकर बड़ बुलडॉग थिला.
टू प्रोटेक्ट हिम तांको सुरक्षा देबा पे। इन मूनलिट नाइट्स द बिल्डिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। From there one could see the river, small hills, long stretch of paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around, all flooded by the magic of moonlight. In moonlit nights, moonlit means lit by moon বা moonlight, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୁକ୍ଡ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦେର୍ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସି, ସେଇଠୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଦ ରିଭର, ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍, ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍। ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍ କହିଲେ ଧାନ ବିଲ, ରାଇସ୍, ଯେଉଁଠି ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ, ସେଇ ଧାନ ବିଲ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ। ହଟ୍ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ। ସ୍କାଟର୍ଡ, ସ୍କାଟର୍ଡ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା, randomly distributed। small huts of poor farmers, ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। all around, all flooded by the magic of moonlight। flood, flooded means covered, ଚାରିଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସବୁ ପୁରା କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା। During moonless dark nights, the building had a special look of its own. The building, the walls all around, and the gardens inside were lit by lamps. ଯେତେବେଳେ ମୁନଲେସ୍ ମାନେ ଜହ୍ନ ନଥାଏ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୁକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଦ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦ ୱାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ବିଲ୍ଡିଂ, ପାଚେରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଗିଚା, ଦେ ୱେର୍ ଲିଟ୍ ବାଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସେଥିରେ ବତୀ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ। LIT ଲିଟ୍, ଲିଟ୍ଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ, LIGHT ଲାଇଟ୍ର, ଲାଇଟ୍, ଲିଟ୍, ଲିଟ୍, ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟେଡ୍, ଲାଇଟେଡ୍ ବି ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁନଲେସ୍ ନାଇଟ୍ରେ, ଜହ୍ନ ନଥାଏ ଆକାଶରେ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବତୀ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଲ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା। From a distance one could see dazzling stars in the sky, but the small huts were sleeping invisibly at night. From a distance, ଦୂରରୁ one could see dazzling, dazzling means shining, ଚମକୁଥିବା। ଦୂରରୁ ଜଣେ ଚମକୁଥିବା ତାରା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଆକାଶରେ ଥିବା ଚମକୁଥିବା ତାରା। ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ, ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ, ଦେ ୱେର୍ ସ୍ଲିପିଂ ଇନଭିଜିବଲି, ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ, କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। The rich man lived there like a king very happily. His happiness got doubled when he saw the poor farmers living in small huts down the hill, toiling hard in their fields. ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ lived there like a king, ରାଜା ଭଳି ସୁଖର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, happy। His happiness got doubled, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇଯାଉଥିଲା
केतेबेले when he saw the poor farmers जेतेबेले से देखुथिले saw is the past form of see saw जेतेबेले से देखुथिले कोन देखुथिले poor farmers living in small huts down the hill से पहाड़र निच भागरे रोहुतबा छोट छोट कुड़िया रे थिबा गरीब चासी टॉयलिंग मीन्स हार्ड लेबर कठिन परिश्रम जेतेबेले से देखुथिले कठिन परिश्रम करतुबा गरीब चासी टॉयलिंग हार्ड इन देयर फील्ड्स निज निज बिल रे काम करतुबा चासी को देखिले तांकर खुशी द्विगुणित हेउथिला एथिरु तमे आकलन कर तांकर मनोभाव किपरि गरीब चासी को दुखरे बा कष्ट पाइबा देखि से खुशी होतिले his only sorrow was that his only son did not like all his richness and glamour his only sorrow माने दुख तांकर गोटिए दुख थिला जे his only son गोटिए मात्र पुओ did not like all his richness ताको ई सबु richness माने धनी being rich ए जो धन संपत्ति एंड ग्लैमर जो विराटकाय महल रोहुतिले ग्लैमर मीन्स ब्यूटी और ए वेरी बिग साइज ए सबु रिचनेस ग्लैमर तांकर गोटिए बोली पुओ को बिल्कुल पसंद नथिला often he found him sitting alone in his garden looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields and the rivers flowing by. He was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father. Often, सबोळे he found him sitting alone. से धनी व्यक्ति निज पुओ को कोठी देखुथिले सिटिंग एलोन एकुटिया बसी थिवार देखुथिले इन हिज गार्डन बगीचा रे लुकिंग डाउन द हिल एट द पुअर फार्मर्स टॉयलिंग इन देयर फील्ड्स से निज पुओ को कोठी देखुथिले एका एका बगीचा रे बसी कौन से देखुथिला ना पहाड़ तले जो पुअर फार्मर्स गरीब चासी कठिन परिश्रम करिवा से देखुथिला एंड द रिवर्स फ्लोइंग बाय बही जाउथबा नदी सब से देखुथिला. He was found to be very indifferent. Indifferent means having no interest. ताहार किछि भी आग्रह नथिला कोनथिरे इन द रिचनेस एंड ग्लैमर जो धन संपत्ति तांको बापांकर एते बड़ महल ए सबुतिरे ताहार कोनसी आग्रह ही नथिला. Okay, so this is SGP 1. Let us discuss some question answers. 1. What is this paragraph about? A paragraph टी केउ विषय अछि? This paragraph is about a very rich man. जणे बहुत धनी लोकंक विषय रे अछि. 2. Where did the rich man live? धनी लोक केउठारे वास करथुले? The rich man lived in a big palatial building. गोटे विराटकाय प्रासाद सदृश घर से रहुथिले. 3. Where was the building? Building टी केउठार थिला? The building was on the top of a hill. Building टी पहाड़र शीर्ष देश रे थिला. 4. What was his house surrounded by? तांको घरर चारिपटे कौन थिला? The house was surrounded by tall boundary walls. तांको घर चारिपटे कौन बेढ़े हिथिला? ना उच्चा उच्चा पाचेरी सब. 5. What were the boundary walls like? Boundary wall गुडी को किभଳି थिला? The boundary walls were like the great wall of China. पाचेरी गुडी को चाइना जो ग्रेट वॉल से भलिया विराटकाय थिला. 6. What did he have to protect him? निजर सुरक्षा पाई कौन थिला? He had private soldiers and a great bulldog
टू प्रोटेक्ट हिम तांकर सिक्यूरिटी गार्ड्स थिले आउ गोटे बुलडॉग थिला तांकर सुरक्षा पई 7 हाउ डिड द बिल्डिंग लुक इन ए मूनलिट नाइट जह्न आलोरे बिल्डिंग टी केउ भली देखा जाउथिला द बिल्डिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन ए मूनलिट नाइट जह्न आलोरे बिल्डिंग टी बहुत सुंदर देखा जाउथिला 8 व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द बिल्डिंग से बिल्डिंग रु कौन सब दृश्य होतला वन कुड सी रिवर स्मॉल हिल्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पैडी फील्ड्स स्मॉल हट्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड जड़े से बिल्डिंग रु नदी छोट छोट पहाड़ लंबी जाइथिबा धान खेत आउ छोट कुड़िया सबू देखि पारुथिला 9 What was something special of the building? When? Building टी रो स्पेशलिटी कौन थिला आ केते बेले During moonless dark nights the building had a special look. It was lit by lamps. जह्न नथिबा समय रे अंधकार राति रे बिल्डिंग टी बहुत सुंदर देखा जाउथिला काहेकि ना चारियाडे दीप सबू लगा जाउथिला 10 The small huts were sleeping invisibly at night. Why? छोट कुड़िया सबू राति रे अंधकार रे अदृश्य देखा जाउथिला काहेकि The small huts were invisible at night because they were so poor that they did not have light. छोट कुड़िया गुड़िक राति रे अदृश्य हो जाउथिला कारण से माने एते गरीब थिले सेमान पाखरे लाइट जळिया पई किछि उपकरण नथिला 11 हाउ डिड द रिच मैन लिव देयर धनी लोक सेठारे किभଳି रहउथिले द रिच मैन लिव्ड देयर लाइक ए किंग वेरी हैप्पीली धनी लोक जनको जने राजा भଳି जीवन यापन करथि 12 व्हेन डिड हिज हैप्पीनेस गेट डबल तांको खुशी केतेबेले द्विगुणित होउथिला हिज हैप्पीनेस गॉट डबल्ड व्हेन ही सॉ the poor farmers toiling hard in their fields जेतेबेले से गरीब चाषी को निज जमी रे कठिन परिश्रम करबा देखुथिले सेतेबेले तांकर खुशी द्विगुणित हो जाउथिला 13 what were the poor farmers doing down the hill गरीब चाषी माने सेही पहाड़ तले कोन करूथिले the poor farmers toiled hard in their fields गरीब चाषी माने निज निज जमी रे कठिन परिश्रम करुथिले 14 व्हाट वाज हिज ओनली सरो तांकर केवल गोटे दुख कोन थिला हिज ओनली सरो वाज दैट हिज सन डिड नॉट लाइक ऑल हिज रिचनेस एंड ग्लैमर तांकर गोटे दुख थिला जे तांकर एकमात्र पुओ ए सब धन संपत्ति को पसंद करनथिला 15 What did the rich man often find him doing? तांको पुओ सब बळे कोन करबा देखा जाउथिला He was found sitting alone in his garden looking down the hill. से निज बगीचा रे एकुटिया बसी पहाड़ तळको चाहि रहउथिला 16 Was the son happy with all the richness and glamour of his father? Which line tells you so? तांको पुओ ए सब धन संपत्ति रे खुशी थिला कि केउ लाइन रो जाना जाउछि The son was not happy with the richness and glamour of his father. The line that tells this is he was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father. तांको पुओ बापांकर धन संपत्ति रे बिल्कुल खुशी नथिला एई लाइन रो जाना जाउछि 17 What does the word indifferent mean? Indifferent ro meaning kon? The word indifferent means having no interest. Indifferent ro अर्थ होछि कोनसी आग्रह प्रकाश न करिबा. Okay, we have completed
SGP1. In the next part, we will discuss SGP2 and post reading section. Thank you for watching the video. If you have any suggestions or questions, please write down in the comment section. भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद. जदि भिडियोटी भल लागिछि ताहले लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू.